Hello guys, I am Shubham from Tutorials. This video is all about enzymes. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. So enzymes is a vast topic actually. बहुत कुछ है enzymes में पढ़ने के लिए, but I will be discussing very important things from my exam point of view. Okay, and most of the questions from the repeated areas जो concepts है topics है that I will be giving you. Okay, so let's start. Enzymes are powerful biological catalysts, right? So what are enzymes basically? Enzymes are the catalyst, right? Biological catalyst. Catalyst means what? जो reactions है, right? जो body में reactions होते हैं उसको enhance करने का काम करते हैं enzymes. See, it is written rate accelerations by enzymes are often far greater than those by synthetic or inorganic catalysts, right? Like all catalysts, enzymes increase reaction rates. जो reaction के rates होते हैं वो increase होता है because of enzymes, right? Lowering reaction activation barriers. Okay, this is very important point, right? I will highlight this. Increase reaction rates, lowering reaction activation barriers. So reaction rate is increased. I will write here reaction rate is increased, but activation energy is lowered. Okay, this is very important point you have to understand. Enzymes do not affect the equilibrium of reaction. Right? मतलब एक ऐसा point होता है where the reaction is said to be in equilibrium. Okay, so enzymes that equilibrium को उस equilibrium को affect नहीं करता. Got it? Next point. Enzymes exhibit a very high degree of specificity. Okay, specific होते हैं enzymes. Each enzyme catalyzes only one chemical reaction. एक ही reaction को catalyze करता है. Or sometimes a few closely related reactions. मतलब एक reaction या फिर reactions which are related. Reaction activation barriers are thus lowered selectively. Selectively activation barriers कम होते हैं, lowering होता है उसका. Next point is enzymatic reactions occur in specialized pockets called active sites. Okay, मतलब enzyme काम किधर करता है? Where do they work? So basically they work in small pockets which are specialized in the function, right? उस pockets को बोलता है active sites. These pockets are similar to ligand binding sites, right? जैसे रिसेप्टर पर ligand bind होता है वैसे ही ये होता है active sites. Except that a reaction occurs there. The conversion मतलब reaction उधर क्या होता है? Substrate का conversion होता है to a molecule that is acted on by an enzyme to a product. Okay, so active site is where enzyme works, right? और active site पर क्या होता है? Substrate is converted to product. Got it? Next point, two concepts explain the catalytic power of enzymes. Which are those two concepts? First, enzymes bind most tightly to the transition state of the catalyzed reaction. See, this is also very important point. कहाँ पर bind होता है? Enzyme transition state, okay, of that reaction, using binding energy to lower the activation barrier, right? What is uses binding energy को
यूज करते हैं फॉर लोअरिंग द एक्टिवेशन बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप क्या है? एंजाइम एक्टिव साइट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इवोल्यूशन to facilitate multiple mechanisms of chemical catalysis simultaneously, right? मतलब एक्टिव साइट्स का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक्टिव साइट्स। हाउ दिस आर ऑर्गेनाइज्ड? बाय एवोल्यूशन, ओके, एवोल्यूशन टू फैसिलिटेट मल्टीपल मैकेनिज्म्स चलते हैं वहाँ पे ऑफ केमिकल कैटालिसिस साइमल्टेनियसली। मतलब at the same time many multiple reactions can, not reactions actually, mechanisms, okay, multiple mechanisms are working there. Next point, many enzymes are regulated, proper regulation होता है enzymes का। Regulatory enzymes include reversible covalent modification, okay, covalent modifications आते हैं, as well as binding of allosteric modulators, right? प्रोटोलिटिक एक्टिवेशन भी होता है यहाँ पे। देन कोवेलेंट तो है ही, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग भी है टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड इलैबोरेट रेगुलेटरी कैस्केड्स, राइट। प्रॉपर रेगुलेशन होता है ऑफ एंजाइम एक्शन और फंक्शन। एंजाइम्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू मल्टीपल मेथड्स ऑफ रेगुलेशन which allows for exquisite control of every chemical process that occurs in a cell, right? मतलब multiple pathways है for regulation, like we saw covalent है, non covalent है, allosteric है, proteolytic है, right? तो डिटेल में देखेंगे हम ये बेसिक 5 functions है, right? Now we will cover everything in detail. So basically enzyme require cofactors for the function, okay, cofactors. Now these cofactors are of types metal ions and coenzymes, right? Coenzymes and coenzymes may be co-substrate है and prostatic group, okay. Now we know that enzyme is basically protein, okay. All enzymes are protein, right? But note that all proteins are not enzymes, right? All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. So enzymes protein है, then see, now we have to know that as I told enzyme को चाहिए cofactor, okay, cofactor. So when this is state of active, right, active enzyme, and ये जो complex है ना enzyme with cofactor, that is known as holo enzyme. And holo enzyme without cofactor, right, cofactor अगर नहीं है means that is inactive, right, inactive enzyme, that is called oppo enzyme, okay. So these terms are very important, holo enzyme and oppo enzyme. Oppo enzyme is protein part of enzyme, okay. So remember this thing, oppo enzyme is protein part of enzyme. So oppo enzyme is also called as oppo protein, got it. and यहाँ पे जो कोफैक्टर लिखा है तो उसमें कोफैक्टर में कोएंजाइम हो सकता है, मेटल आयन, एनीथिंग, प्रोस्टैटिक ग्रुप भी बोलते हैं, राइट. सो होलो एंजाइम बेसिकली कंटेन्स enzyme plus extra factor and that forms a catalytically active functional enzyme, okay. Now this is important table, okay. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए repeated. Some inorganic ions that serve as cofactors for enzymes, very important. जो copper है that is for cytochrome oxidase,
iron 2 plus 3 plus, cytochrome oxidase, catalase, peroxidase. Potassium pyruvate kinase, magnesium 2 plus, hexokinase, glucose 6 phosphatase, pyruvate kinase. Manganese 2 plus, arginase, ribonucleotide reductase. Molybdenum dinitrogenase. Nickel urease. Zinc carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, carboxypeptidase A and B. Okay, so very important. और एक टेबल है, right? Everything I am showing you, this is found in questions, right? And very important. These things are very important actually. This table is related to vitamins, right? Some coenzymes that serve as transient carriers of specific atoms or functional groups. Okay, very important. Like your coenzyme biocytin, and example of chemical group transferred. Biocytin transfer क्या करता है CO2. Okay, CO2 transfer करता है. Dietary precursor in mammal is biotin. Vitamin B7 है. Coenzyme A transfer acyl group. Okay, A for acyl group. Pantothenic acid, vitamin B5 and other compounds, right? Then this is cobalamin, deoxyadenosine cobalamin, coenzyme B12. Okay, this transfer hydrogen atom and alkyl group, vitamin B12. Cobalamin, you know that vitamin B12, to that. Next is flavin adenine dinucleotide, FAD, right? FAD. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. डायटरी प्रिकर्सर राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, then lipoic acid. Okay, lipoic or lipoic acid transfer electrons and acyl group, not required in diet, right? Not required in diet. Then is NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD, hydride ion transfer, and dietary precursor is nicotinic acid, that is niacin, vitamin B3. Okay, next is pyridoxal phosphate transfer amino group, right? Dietary precursor pyridoxine, vitamin B6, right? Tetrahydrofolate, 1 carbon group. Okay, THF, tetrahydrofolate, and this is related to folate, vitamin B9. And next is amine pyrophosphate coenzyme transfer aldehyde chemical group. Okay, and this is related to thymine, vitamin B1. Okay, this is TPP, thymine pyrophosphate. Got it? So this is very important. Now, classification of enzymes, international classification of enzymes. First is oxidoreductase. Oxidoreductase oxidation reduction reactions में use function करते हैं. What they do? Transfer of electrons, hydride ion or H atom, hydrogen atoms. Got it? Then transferase. Transfer of functional groups. Okay, transfer करते हैं functional group का. So here group transfer, right? Then hydrolysis करेंगे. Hydrolysis. Okay, transfer of functional groups to water. Then lysis means cleavage, right? Cleavage of carbon oxygen, carbon nitrogen or other bonds. Okay, any bond it may be, it will do the cleavage by elimination, leaving double bonds or rings, or addition of groups to double bond. Okay, double bond का break करके means
डबल बॉन्ड में भी ग्रुप को ऐड करेंगे. ओके, here it is written lysis group elimination to form double bonds. डबल बॉन्ड्स सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन लिखा है, बट यहाँ पे डिटेल्ड है. एलिमिनेशन भी हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड्स लीव होते हैं, लिविंग डबल बॉन्ड्स और रिंग्स, और एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स. Got it? Isomerases will do the isomerization. Simple. Okay, see here. Transfer of groups within molecules, same molecule में transfer to yield isomeric forms. Right? Same molecule का different forms, isomers. Ligase or ligase. Ligase basically join, right? Bond formation करता है. Okay, bond formation. Formation of carbon-carbon, carbon-sulfur, carbon-oxygen, carbon-nitrogen bond by condensation reactions coupled to cleavage of ATP और similar cofactor. Okay, मतलब bond formation करता है by using ATP और similar cofactor. तो जो ये factors है ATP factor, उसका cleavage होगा to form new bonds. So here it is written bond formation coupled with ATP hydrolysis. Got it? और एक क्लास है ट्रांसलोकेजेस. ट्रांसलोकेज मीन्स व्हाट? ट्रांसलोकेज इज लोकेशन चेंज, राइट? लोकेज इट इज रिलेटेड टू लोकेशन. so basically movement, see, movement of molecules और ions, जो molecules है उसमें movement होगा across membranes, right? membranes, plasma membrane, और their separation within membranes. तो membrane में जो movements होते हैं molecules के, वो वाले enzymes में आते हैं ट्रांसलोकेज, right? see, flipase, flopase, scramblase, right? Now we will see enzyme kinetics. Okay, enzyme kinetics, very important, right? मतलब mechanism, enzyme काम कैसे करता है. So I have taken here my handwritten notes, okay, which contains information that is useful to solve questions. Okay, मतलब formulas है, how you can remember things, because enzyme kinetics देखा जाए तो टफ टॉपिक है, वास्ट है बहुत, right? But I have made it simple and easy to remember. So let's see. Enzyme substrate का conversion करता है to the product. Okay, so first enzyme substrate complex form होगा, right? And then this is converted to product. Substrate is converted to product, and then enzyme plus product separate हो जाएंगे after reaction. Got it? So this is the first reaction. Enzyme plus substrate forms a enzyme substrate complex, right? Enzyme substrate complex, ये first बनेगा. Okay, and this is reversible reaction. You can see जो ये K है, that is rate. Got it? Rate है. And for this reversible, K minus 1. Okay, and then this enzyme substrate is converted to enzyme plus product. Separate होगा after conversion. Got it? This is K2. Separate rate है इस reaction का. K2 and here K minus 2 for reversible. So this is the second reaction. Got it? And this is slower and rate limiting. Got it? Very important. ये जो second reaction है, enzyme substrate getting converted to enzyme plus product, slower है and rate limiting है, right? So these things you have to remember directly of enzymes. Michaelis-Menten equation, very important. Okay, this is a rate equation. You can see इसका formula है, very important. Numerical solve करने में भी formula help करता है. तो numericals भी बहुत आते हैं enzyme से. In every exam, whether it may be CSIR, GATE, right, DPT, ICMR, everywhere
Same type of questions are asked. Numericals, theoretical, both. Statement based. So this is the formula. V0 is equal to V max S. S is substrate concentration. What is this? Substrate concentration. Substrate concentration. And V max is, V is velocity. Right? Velocity. V stands for velocity and max stands for maximum. Okay. V0 is initial velocity. Right? Then this is also again very important point. When V0 is half Vmax, right? Half Vmax जब होगा, that time Km, this is constant of, this is constant, Michel's constant. तो ये जो Michel's मेंटेन का constant है, ये equal होगा to the substrate concentration. Okay, this is very important from Michel's Menten equation. That is also called rate equation. So you have to remember this formula and this. Next, Lin-Weaver-Burke equation. Lin-Weaver-Burke equation. This is just formed by reciprocating Michaelis Menten equation. मतलब ये जो इक्वेशन है उसका उल्टा करना है, राइट? जो मिचेलस मेंटन का इक्वेशन है उसका उल्टा करना है, तब ये फॉर्म हुआ. ओके, तो 1 upon V0 here what is written, 1 upon V0 is equal to Km upon V max plus S, substrate concentration plus 1 upon V max. Got it? Next is turnover number. Okay, turnover number K cat, right? Catalysis, cat for catalysis. K is rate. So number of substrate molecules converted to product, मतलब कितने substrate molecules का product में conversion हुआ in a given unit of time, right? मतलब time दिया है, उस time में conversion कितना हुआ on a single enzyme. See, single enzyme per molecule when the enzyme is saturated with substrate. मतलब enzyme अभी पूरा full हुआ है. Suppose this is a enzyme, right? ये पूरा substrate से full हुआ है. No substrate can add. At that time, saturated means it is fully loaded with the substrate. That time, how much substrate molecules are converted to product? So इसका भी formula है K cat is equal to V max upon AT. See, this is enzyme at time, given time, right? T stands for time. So all these formulas will be useful for question solving as well, numericals. Specificity constant. Okay, specificity constant, that is rate constant. Formula K cat upon Km. Right, K cat upon Km. Rate constant for the conversion of enzyme substrate to enzyme product. Okay, मतलब पूरा reaction जो हमने देखा, पूरा reaction. This is the first reaction. Then this will be converted to enzyme product, where again this will be getting separated. So this full reaction का rate अगर हमें देखना है, right, rate constant or specificity constant, that is this formula. Okay, now we will be seeing enzyme inhibition, right? Enzyme inhibition मतलब enzyme का action कब stop होगा. Okay, तो इसमें 2 pathways है, reversible and irreversible. Okay, reversible में again 3 है, competitive, uncompetitive
and mixed. Got it? Let's see now again with the help of notes. तो इसमें भी डायरेक्ट है, एंजाइम्स का प्रॉब्लम है सब कुछ याद रखना है. ओके राइट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर. डायरेक्ट है बहुत. ओके बट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इज आस्क्ड यूजुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल इनहिबिशन, इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ओके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पीट करेगा फॉर द सेम साइट. राइट, सी एक्टिव साइट जो होती है ना, एक्टिव साइट उसके लिए कंपटीशन करता है विद सबस्ट्रेट. तो योर अफेक्ट्स Km बट नॉट Vmax. ओके Km अफेक्ट होगा बट Vmax अफेक्ट नहीं होगा. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है एट विच V0 इज इक्वल टू हाफ m Vmax, जो when V0 is equal to half of Vmax, तब apparent Km increases. Okay, apparent Km is what? Km का increase होता है by a small factor. See, small factor alpha. Okay, small change in Km. That is basically apparent Km. Remember that small change is basically factor alpha. Got it? Then this binds to active site of enzyme. Got it? Active site पर bind होता है. Competitive. From the name only it is understanding that competition कर रहा है ये substrate के साथ. Okay, I will write here to remember. Competes with substrate for enzyme binding. इसका ये फॉर्मूला भी है V0 is equal to Vmax S upon alpha Km plus S. Last point, enzyme plus I inhibitor forms enzyme inhibitor complex. Same like enzyme जब सबस्ट्रेट के साथ है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वैसे ही अगर इनहिबिटर के साथ है कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा. This is Ki. Ki means rate of inhibition, right, of this reaction. Inhibition. Ki stands for inhibition. Next is uncompetitive inhibitor. Uncompetitive means ये compete नहीं करेगा. Okay, no competition. So this is how you can remember no competition with enzyme. एंजाइम के साथ कंपटीशन नहीं करता, मतलब बाइंडिंग साइट जो है ना दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट. ओके, नो एक्टिव साइट इन्वॉल्व, अलग साइट है. Here Km and Vmax both declines. Okay, very important. All the points very important. Km and Vmax दोनों भी यहाँ पे डिक्लाइन होंगे, कम होंगे. Got it? यहाँ पे जो बाइंडिंग है कि हाउ इट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर इनहिबिटर बाइंड होता है. आफ्टर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर. ओके, ट्रायंगल है बेसिकली, ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल तीन लोगों का, राइट, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, तीनों का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है. और यहाँ पे जो ये रेट है दैट इज Ki डैश, राइट, Ki डैश फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. फॉर्मूला V0 is equal to Vmax S upon Km plus alpha dash, यहाँ पे लिखा है अल्फा डैश सबस्ट्रेट. थर्ड टाइप मिक्स्ड इनहिबिटर, राइट, मिक्स्ड इनहिबिशन वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. व्हाई आई विल टेल यू. सी, यहाँ पे भी बाइंड सेट सेपरेट साइट है. ओके, नो एक्टिव साइट इन्वॉल्व हियर आल्सो. हियर एंजाइम इनहिबिटर मतलब स्टार्टिंग में बाइंड हो सकता है या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट और आई.
राइट, दोनों केसेस पॉसिबल है एज वी सॉ इन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, राइट, दोनों सीन पॉसिबल है के आई डैश के साथ, राइट, दिस थिंग्स आर सेम, अफेक्ट्स बोथ के एम एंड वी मैक्स, राइट, दोनों भी अफेक्ट होता है। वी मैक्स ऑलवेज डिक्लाइन, ओके, रिमेंबर, ऑलवेज डिक्लाइन मतलब हमेशा ये कम होगा वी मैक्स। के एम है इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन अल्फा एंड अल्फा डैश, एंड दिस इज अ स्मॉल फैक्टर, इससे फर्क पड़ता है, ओके, सो डिपेंडेंट ऑन दिस km can increase or decrease. So when alpha is greater than alpha dash, km increases, okay, I can understand this is little complex, but there is no option, you have to remember, okay, make your own notes, I will suggest highly, right, save this and make your own notes because this enzyme topic is very important for exam and direct questions hai, only the thing is you have to remember. Then when alpha is less than alpha dash, km decreases, right, मतलब अल्फा जब हाई है तब इंक्रीज होगा km एंड अल्फा जब कम है तो डिक्रीज होगा, so we can say that alpha is directly proportional to km, एक यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं टू रिमेंबर, ओके, जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हेन दिस बोथ आर इक्वल, राइट, वेरी रेयर, रेयरली सीन, ऐसे रिएक्शंस बहुत रेयरली होते हैं, when alpha and alpha dash is equal, this is called non-competitive inhibition, okay, अभी non-competitive and uncompetitive में confusion हो सकता है, but you have to remember again, right, so non-competitive में क्या है, alpha dash is equal and this affects Vmax but not Km, Vmax affect होता है but not Km, got it, so this is about reversible inhibition. Now we will see irreversible inhibition. Irreversible, from the name only we can say that it is not reversible, means here there is tight binding, see, okay, very tight binding है, इसीलिए जो इनिबिटर है वो रिवर्स नहीं कर सकता, एक बार बाइंड हुआ तो टाइटली बाइंड होगा, ओके, so tight binding with an enzyme that can be covalent bond or destroy a functional group, see, जो एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, राइट, मतलब एंजाइम एक्टिविटी के लिए वो ग्रुप इंपॉर्टेंट है और वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो अगर एंजाइम है, सपोज दिस एंजाइम गॉट डिस्ट्रॉयड, क्या है फिर से ठीक होगा, नहीं होगा, दिस विल बी नॉन फंक्शनल देन, so it is irreversible or form highly stable non-covalent association, right, मतलब सिर्फ कोवेलेंट ही नहीं, नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन भी हो सकता है इसमें, but that non-covalent interaction should be strong enough, right, strong enough चाहिए for irreversible reaction, got it, तो इसमें examples है suicide inactivators, mechanism based inactivators, transition state analogs, राइट, ये irreversible inhibitors के एग्जांपल्स, गॉट इट, टर्मिनोलॉजी से हम समझ सकते हैं, सुसाइड मतलब एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा डायरेक्ट, मैकेनिज्म बेस्ड मतलब कुछ तो मैकेनिज्म है, राइट, एंड दैट मैकेनिज्म विल डू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग, हमने देखा एंजाइम बाइंड्स टाइटली टू ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्शन, तो उस ट्रांजिशन स्टेट का एनालॉग है कुछ, एनालॉग मीन्स व्हाट, सेम लाइक ट्रांजिशन स्टेट,
that will bind there at the transition state, then irreversible inhibition होगा. मतलब जो नॉर्मल काम करता है एंजाइम वैसा नहीं कर सकता. राइट. नाउ दिस इज नेक्स्ट we can say type of enzyme, allosteric enzymes. Okay, allosteric enzyme, reversible non-covalent binding of factors called as allosteric modulators or effectors. Right, reversible है, non-covalent है, right, of factors called as allosteric modulators or effectors. तो इसमें क्या होता है, conformational change of enzyme. Right, enzyme का conformational change means what? Structural changes in enzyme. Okay, so the factors are called as modulators or effectors that cause changes in the enzyme structure or conformation. इसमें अभी 2 types है, homotropic and heterotropic. Okay, 2 types, homotropic and heterotropic. Homotropic में substrate is equal to modulator. मतलब जो substrate है ना वो ही modulator का रोल करता है. Very important. In hetero, substrate is not modulator, कोई दूसरा factor है. Right, other factor is involved. Okay, so substrate is not the modulator. Next thing, these allosteric enzymes did not obey Michaelis-Menten equation. Very important. Right, Michaelis-Menten equation जो है ना इसको obey नहीं करते. वो बोलते हैं हम Michaelis-Menten को नहीं obey करेंगे, हमें दूसरा रिएक्शन चाहिए. So this is follows Hill's equation. Okay, Hill's equation को follow करता है. So this Hill's equation is derived from Michaelis-Menten only. Right, मतलब Michaelis-Menten से ही diverge हुआ है Hill equation. For some enzymes, an inactive precursor called a zymogen is cleaved to form the active enzyme. Right, मतलब यहाँ पे ना कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसका प्रीकर्सर होता है. ओके, प्रीकर्सर होता है विच इज इनएक्टिव एंड इसका होता है क्लीवेज. क्लीवेज मीन्स व्हाट? ब्रेकेज और कट होना, and then it gets converted to active enzyme. So this is basically called as zymogen, and this active part is called as enzyme. Okay, ये precursor है. Got it? Now you can see this pictures which I am attaching here, right? जो हमने पढ़ा है that is only mentioned here, but you can read by your hand, right? I will suggest you go through this. Okay, read करो, refer this picture, and ये सिर्फ refer नहीं याद भी करना है. Like this जो सी पिक्चर है इसका, ये जो ग्राफ है ना वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ग्राफ से क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी ऐसा ग्राफ भी पुट डाउन करेंगे और पूछेंगे ये कौन सा इनहिबिशन है, हो सकता है. राइट, तो जस्ट नोट केयरफुली द डायग्राम्स. ये भी ए बी सी एवरीथिंग नोट डाउन करो, अच्छे से देखो, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दिस फ्रॉम द पिक्चर्स. See, this also again uncompetitive. Information is same, so I will not discuss everything. The main things I have already highlighted. Right, all these pictures you have to understand. A, B, C. अगर समझा भी नहीं तो भी अच्छे से देखो. Okay, they can ask, they can give this picture and tell you to identify which type of inhibition is seen in this. कौन सा इनहिबिशन है इसमें. राइट, दिस इज ऑफ मिक्स्ड इनहिबिशन. व्हाट इट मिक्स्ड इनहिबिशन में वी सॉ स्टार्टिंग में भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स में भी. व्हाट इट, तो सेम थिंग्स रिटर्न, जस्ट सी द डायग्राम्स. एक टेबल भी है वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी हियर जो इनहिबिटर है, इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स on Michaelis-Menten reaction. Right, type of inhibition none, मतलब नॉर्मल केस दिखाया है
ये इक्वेशन लिखा है मिचेल्स मेंटन, लीन-वीवर-बर्ग इक्वेशन भी है. इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर नन बिकॉज नो इनहिबिशन इज सीन. कॉम्पिटिटिव के केस पे अल्फा के एम हुआ, राइट. यहाँ पर भी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ अल्फा के एम होगा. के एम इंक्रीज होता है एज वी सॉ, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर व्हाट शॉर्ट इंफॉर्मेशन, राइट. तो रिमेंबर अनकॉम्पिटिटिव में अगेन यहाँ पे अल्फा डैश हुआ, got it. So whole equation changes. Here also you can see changes, right? And decrease in Km and Vmax. Both decreases we saw. Vmax and Km दोनों भी decrease होगा in uncompetitive. Mixed case में again you can see ये भी हो सकता है, right? मतलब दोनों possible है. Alpha Km भी and Alpha S भी, ये दोनों यहाँ पे include होगा. You can see लीन-वीवर-बर्ग इक्वेशन भी यहाँ पे चेंज होगा. तो यार यू कैन रिमेंबर, मतलब फॉर्मूलाज आपको यहाँ से याद करने हैं, राइट. नॉट जस्ट सी. दिस विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, राइट. सो एवरीथिंग व्हिच आई एम शोइंग यू दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर इज Vmax डिक्रीज, Km इंक्रीज और डिक्रीज, राइट. देखा हमने डिपेंडिंग ऑन फैक्टर. So what is alpha? See, it is written here. Alpha and alpha dash क्या है वो लिखा है यहाँ पे. Okay, so these are equation. Basically ये numerical है. Enzyme topic is related to derivation, right? तो formulas है तो complex लग सकता है, इसलिए I have made this simple, right? But covering all the important things based on PYQs, right? अभी ये additional information है. Amino acids in general acid base catalysis. So this is a type of catalysis, acid base. तो इसमें which amino acids are involved? First of all you have to remember glutamate है, aspartate है. तो यहाँ पे acid form है proton donor and base form है proton acceptor. So here you can see ये changes तो हमें पता है, right, how reactions occur. But amino acids you have to remember which amino acids are involved. Glutamate, aspartate, lysine, arginine, cysteine, histidine, serine, tyrosine. Many organic reactions that are used to model biochemical processes are promoted by proton donors, general acids or proton acceptor, general bases. The active sites of some enzymes contain amino acid functional groups such as those shown here that can participate in the catalytic process as proton donors or proton acceptors. Nothing, same. मतलब reactions कैसे होते हैं? Just they have shown. But you have to remember that amino acids. Okay. Next. यहाँ पे biologically important nucleophilic and electrophilic groups. Okay. So nucleophilic means what? You can see here. Nucleophilic groups such as hydroxyl, sulfhydryl, amino and imidazole groups are nucleophile in their basic forms. What is basic form में ये nucleophile है. Electrophilic groups contain an electron deficient atom. It is red. Shown here, electron deficient atom. So basically this participate in reactions, right? Reactions कैसे होते हैं? So this form the basis of reaction. अभी ये common modifications है यहाँ पे. Okay, covalent modification. यहाँ पर भी same. You have to see the reaction and amino acids involved, right? Like phosphorylation में tyrosine है, serine है, threonine है, histidine है. Adenylation में tyrosine है, right? Then acetylation में lysine alpha amino है. Okay. Methylation alpha amino. Ubiquitination lysine है. ADP ribosylation arginine, glutamine, cysteine, right? Then methylation glutamate. Okay, so these are the modification, covalent modification and target amino acid is involved. Okay, so this is all about enzyme, right? That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section.
Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.